welcome to the session. This is Shweta Roy, your English master teacher at Vedantu. So today guys, I have brought to you a very important session, that is how to write impressive answers in literature, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, because right now you're going to appear for your exams, right? So I thought of having this session on your demand, because most of you were actually talking about ma'am how to approach the answers, because literature carries the maximum weightage. 40 marks का आपका literature है, ठीक है, तो maximum weightage आपका यहीं पे जाएगा. So what you have to do is strategically plan and write answers so that you can get the maximum marks over here. अगर आप यहाँ पे maximum marks score कर लेते हो and grammar में full marks score कर लेते हो, right, पैसेज में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में आप फुल मार्क्स स्कोर कर लेते हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता गाइस टू स्कोर द हाईएस्ट इन इंग्लिश, राइट? सो दैट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल गाइस, एंड आई विल मेक इट वेरी सिंपल फॉर ऑल ऑफ यू. वी कैन डू इट, वी कैन मेक दिस पॉसिबल, ठीक है? तो अब हम करते हैं शुरू with helpful tips. Okay guys, so let us start with the very first helpful tip, which is being thorough with the chapters and the characters. So सबसे ज्यादा important step, आपको prepare कैसे करना है बच्चा पार्टी, एक सेकेंड रुक जाना. The first thing that you have to do is आपको text को read करना है. Please, NCERT, by text I mean your NCERT chapters and poems, ठीक है? That means prose as well as poetry वाला जो section है, chapters को अच्छे से read करना बहुत जरूरी है, उसके characters को, क्योंकि maximum जो आपका answers है guys, that is going to be MCQ, जहां पे आपको score कर सकते हो 100%, ठीक है? बट कैसे स्कोर करोगे? इफ यू रीड द चैप्टर थरोली. तो पहला स्टेप है बेटा चैप्टर रीड करना. दूसरा स्टेप है टू, अगर आप रेगुलर सेशन में हो तो बहुत बढ़िया, अगर आप नहीं हो, अगर आप यूट्यूब वीडियोस फॉलो करते हो तो बेटा सेशंस अटेंड करना. ओके, सो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट step is to attend the sessions very attentively, क्योंकि हम sessions में cover करते हैं the entire summary of the chapter. By summary I do not mean the dry summary, I mean the important portions जहाँ पे हमें stress देना है, जो आपको help करेगा solve करने में the value based questions. तो ये ये सेशंस अगर आप अटेंड नहीं करोगे तो जो आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आएंगे वैल्यू बेस्ड, वहां आप फंस जाओगे, ठीक है? तो अगर आप इन डेप्थ एनालाइज, क्योंकि हम सेशन में क्या करते हैं, वी एनालाइज द चैप्टर्स इन डेप्थ. सो इफ यू डू नॉट पे अटेंशन, इफ यू आर नॉट अटेंटिव इन द सेशन, तो आप इन डेप्थ एनालिसिस नहीं कर पाओगे. जो मेजर पॉइंट्स है in the chapter which is essential for you to understand, that you will not be able to, and as a result क्या होगा, you won't be able to create good answers which can fetch you the highest marks, क्योंकि English बेटा subjective है, ठीक है? It will differ, the marks will differ from one person to the other. तो हमें क्या करना है, हमें अपने we have to try our best. तो हमें फुल मेहनत करना है, पूरी जोर लगानी है. तो वही टिप्स मैं आज आपको दूंगी कि कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है बच्चा? इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. The next is practice. Yes, practice is going to make you perfect. तो थर्ड जो स्टेप है, आफ्टर वॉचिंग द सेशन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है. क्या प्रैक्टिस? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से आपको प्रैक्टिस करना है. फ्रेम योर ओन आंसर्स. बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सेशन में ही सॉल्व करवाए हैं, तो वहां से आप क्वेश्चंस उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, ठीक है? क्योंकि सेशंस में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उठाते हैं, ठीक है? तो आप कहीं से भी क्वेश्चंस उठाओ, बट फ्रेम द आंसर्स विथ बाय योरसेल्व्स, क्योंकि हम पॉइंट्स बता देते हैं इन द सेशन,
आंसर्स भी आपको बता देते हैं, बट आपको क्या करना है, आपको उसको सिर्फ रटना नहीं है. यू डोंट हैव टू मेमोराइज वट एवर वी आर गिविंग यू. You have to understand the approach of writing the answer and write on your own, taking help, taking the guidance from us. आपको गाइडेंस लेना है, आपको रटना नहीं है. आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू गाइज, प्लीज डू नॉट ट्राई एंड मेमोराइज द आंसर्स. दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच. Okay, you have to practice and frame your own answers. That is very, very, very important. Next is, beta, don't exceed your word limit. Why am I saying this? Because you won't be able to complete your paper if you keep on writing. Most of the times kya hota hai, the main problem that the students face is, सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चंस वो करते हैं उसमें इतना ज्यादा टाइम लगा देते हैं कि आखिरी तक पहुंचते पहुंचते उनके पास टाइम नहीं बचता है. तो ऐसा मत करना. व्हेन इट इज अ 2 mark क्वेश्चन गाइज, 2 mark के क्वेश्चन में डू नॉट एक्सीड मोर देन 3 लाइन्स. ठीक है, मैक्सिमम 4 लाइन्स, उससे ज्यादा नहीं. ठीक है, देन तो ऐसे आपको एक्सीड नहीं करना है वर्ड लिमिट, बट ऑल्सो डू नॉट मिस आउट द डिटेल्स. So what you have to do is you have to make your answers crisp, concise. ठीक है, सॉरी, ठीक है, कंसाइज करना है, क्रिस्प करना है. That which means your answer should not exceed its word limit and it should also not miss out the important details. ठीक है, that is something which you have to remember. Next, long answers. By long answers, now the paper pattern has changed and we have only 5 marks questions, right? So long answers, that is the 5-mark question, should at least have introduction, body and conclusion. 1 line introduction, at least 1 or 2 lines. ठीक है, body and conclusion भी 1 or 2 lines का होना चाहिए. Please make sure that your long answers should contain this structure, right? Okay, so that should be the approach. Now अब मैं दिखाऊंगी कुछ बहुत ही simple approach to write your answers. देखो, बहुत ज्यादा myth है बच्चों में, which I am going to break. That myth is, should we use fancy vocabulary in our answers? No, not necessary. ठीक है, writing good answers does not mean that you have to use fancy vocabulary, not at all. What is important is, grammatically it should be correct, there should be no spelling errors and no punctuation mistake. So these are the 3 key points that you have to remember. Also, when you are looking for a literature answer, it should not miss out the detail that is given in your text. So be thorough with the text. Don't make grammatical errors, spelling errors and punctuation mistakes. And don't repeat the same word again and again. So try and use synonyms instead of repeating the same word again and again, which causes monotony. So this is a very simple trick to enhance the quality of your answer by not using fancy words, but by using synonyms. Simple synonyms use karo. All right. So this is a myth which I have busted, guys. Okay. You do not need to use very fancy and poetic language in order to intensify your answer. Right. Okay. Next is, it should be relevant to the context. So whatever the question is, you have to give brief, to the point answer. As I told you, concise, brief and to the point. To the point is to the context. Brief, by brief, I do not mean just 1 line. In 1 line, you can end the question. No, you have to be a bit elaborative, but that does not mean that you would be exceeding the word limit. It is of no use, right? You will be wasting your time. You won't have time for the other, the rest of the paper. You have to complete your paper as well, right? So you have to be relevant to the context of the question.
So guys, I hope you are enjoying the session till now. After this, guys, I'm going to do not go anywhere because right now I'm going to show you 2 or 3 sample questions and how to answer those questions using the tips that I have given. Okay. So that is going to be super helpful for all of you guys. Okay, so please stay tuned. By then, let me announce something. Let me give you some information, guys. If you want to join us further to gain 100% knowledge and score 100% marks, what you can do is you can visit the link below in the description box and pinned comment and use the coupon code. The coupon code is SWRPRO, which is going to give you 20% discount. Right now, let me tell you guys what is the benefit of taking the pro classes. Okay. So first of all, guys, you are going to have unlimited live classes with fun and high level quiz in each session. Okay? You could compete with the students throughout the world, and even the replays, if you watch the replays, they are also going to be super amazing because they are going to be interactive. You even have live quizzes in the session, in the replay session with the leaderboard, which is going to show you the overall class rank. So you can analyze yourselves, guys, where you stand. Plus, you can download the content at the end of each session. I will show you how to download the notes as well. Plus, you have class, doubt solving. Class teachers would be there, an entire team of class teachers would be there to solve all your doubts. Okay? So, in the live class, you would be solving your doubts then and there. Okay? So, that is something super amazing. No piling up of your doubts. Plus, after each session, you would have assignment. If you follow that, if you do that assignment, you would be able to understand where you stand. Plus, we have quality tests. We take quality tests and we give you the performance report of those tests. So, if you take those tests, you will be able to analyze where you stand. That is self analysis, which is very, very important. Plus, all the revision notes and the revision series that you can solve. And the best part is we also have the micro courses. Those are the chapter wise courses. So students facing problem in any particular chapter can separately also take a micro course pertaining to that particular chapter, but you do not have to pay anything extra for that. Plus, we have launched crash courses recently where you can also get enrolled. So all of these are free, guys. You just have to click on the link in the description box and pin comment and use the coupon code for the discount price. Now the discount price is, see, if you the pro price is 1500, and if you use the coupon code SWR Pro, ये आ जाएगा आपका 1200 में, which is going to give you per class price that is 6 rupees. And that is super amazing, and I'll show you how exactly you can avail this wonderful offer, guys. एक second रुक जाना, I will just now show you. देखो, ये कोर्स है, मैं चली जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है. If you click here in this course link, आपके पास ये खुलेगा. Okay, click on grade 10th. Okay, CBSE 2021, let's say. अब आप देख सकते हो सारे फीचर्स, टेस्ट सीरीज एनालिसिस, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, असाइनमेंट, स्टडी मटेरियल, एवरीथिंग. द मोमेंट यू प्रोसीड टू पे, क्लिक ऑन प्रोसीड टू पे. यहाँ पे आपको कोड अप्लाई करना है. पहले से ये दूसरे चैनल का कोड अप्लाई किया हुआ है. लेट्स सी आई अप्लाई माय कूपन कोड SWRPRO. द मोमेंट यू क्लिक ऑन अप्लाई, आप देख रहे हो 1200 हो गया है, ये 1200 instead of 1500, right? So that is the kind of discount that you are getting, which is making this very affordable. Now I'll show you, I'll take you through the platform. ये देखो, ये है हमारा platform. Okay, and let me show you the replay of one of my sessions. तो ये आप देख सकते हो replay, ये आप देख सकते हो, ये देखो.
There are so many doubts. There are so many. These are the quiz questions जहाँ पे बच्चों ने perform किया है. Okay, and 23 doubts asked and 23 doubts solved. 3 broadcasted doubts जो कि conversation के through solve हुए हैं. Apart from this, yes, we do solve a lot of doubts in the via the chat box that we have in our platform. Let me play the replay थोड़ा सा so that you get a hang of our platform as well. तो ये थोड़ा सा आप देख लो. Okay, not okay, this is how it looks like. These are the quiz questions. Okay, and this is the chapter Bholi. Okay, so this is how we deal with each chapter, guys, right? And now I'll show you how you can get notes. तो देखो बेटा, get notes का ये ऑप्शन है. यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो तुरंत तुरंत आपको नोट्स भी मिल जाएगा. ओके, लेट इट लोड. थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है. ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो सारे के सारे नोट्स, इवन द हैंड रिटन नोट्स ऑफ द टीचर्स. ठीक है, ये सब आपको मिल जाएगा. ऑल राइट, रेडीमेड. सो बहुत कम मेहनत करना होगा आपको, राइट? सो सिस्टमैटिक अप्रोच इज व्हाट यू नीड. ओके, सो लेट मी कम बैक अगेन. आई होप आई एम बैक. Yes, okay. So as I told you guys, you can see how beneficial this is going to be. Super helpful to all of you. So definitely I would be recommending this to all, and it's very affordable as well. ठीक है? Okay, now let me show you how to write. Let's say this is the question. Question पढ़ लेते हैं. 100 to 120 words, that is 5 marks का question है, guys. Bholi chose a dignified life of service rather than surrendering herself to a greedy old man for the rest of her life. Education provides the required stimulus to overcome one's personal barriers. Explain the role of education in shaping the life of a child with respect to the lesson Bholi. Right, so basically you have to talk about the education, importance of education, and illustrate this with the help of the chapter Bholi. ठीक है, so it's basically theme based question. राइट, तो आप इसको सबसे पहले, आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन. सॉरी, ऊपर का थोड़ा कंटेंट नहीं दिख रहा है आपको, सो आई वुड बी एक्सप्लेनिंग दिस, डोंट वरी. सो एडुकेशन गिव्स द रिक्वायर्ड स्टिम्युलस, ठीक है, टू वंस पर्सनल बैरियर्स एंड शेप्स द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड. Okay, education is something which is an answer to or a challenge to all the ills of the society. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू बिगिन विथ द इम्पोर्टेंस. सो आप देख रहे हो, ऐसे आप इंट्रोडक्शन दोगे. इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. So you will just have to write the importance of education in 2 to 3 lines as your introduction, and then you start with the example of Bholi कि education ने भोली को कैसे change किया, right? So how she was initially lacking confidence because of her disabilities. ये answer आप देख सकते हो, you can go through, you will be anyways getting these slides, right? Her ugliness, her stammer did not let her progress, and how she changed. कैसे change आया? School changed her life completely. Her teacher treated her with love, kindness, her affection and support, that helped Bholi to have faith in herself, and she grows. अच्छा, सबसे important चीज क्या है? आपको 1 tense मेंटेन करना है. You cannot change your tense, क्योंकि यहाँ पे present tense में लिखा हुआ है. So I have maintained the present tense throughout the throughout the, क्या बोलते हैं इसको, आंसर. ठीक है, I have not changed the tense. If you are writing it in past tense, guys, you please maintain the same tense. तो अगर आप past में लिख रहे हो, past में लिखो पूरा. Present में लिख रहे हो, पूरा present में लिखो. All right? So do not change the tense. And last में, guys, you can read through this. Last में, see, I have also given a proper conclusion. She is like the base of the family and imparts her knowledge and experience to her family. Okay, ये conclusion नहीं है, sorry, it is continued over here. सो एडुकेशन, तो कंक्लूजन भी हम एडुकेशन से ही रिलेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इज ऑन एडुकेशन. ठीक है, तो हम एडुकेशन से ही कंक्लूड भी करेंगे. वी विल स्टार्ट विद एडुकेशन एंड कंक्लूड विद एजुकेशन. ओके, सो हाउ इट ट्रांसफॉर्म, तो कंक्लूड हम करेंगे कि एडुकेशन ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया फ्रॉम
transforms the timid Bholi to the confident Sulekha, who is referred to as the artist's masterpiece at the end of the story. Thus, education changes the life of Bholi, making her capable of differentiating between right and wrong, giving her the courage to assert her rights despite the society's criticism and her harsh circumstances. So you can see how in the concluding part we have linked education's importance with that of Bholi, right? So how did education change the life of Bholi? Plus the importance of education in one's life, we have interlinked it and we have formed a conclusion. So that is exactly how you have to write. That should be the approach to your answer. Okay. Okay. Next question, let's say, अब हम एक short question देख लेते हैं. What should be the approach and what should be the length of your short question? Let's say that there's a there's a poem, Dust of Snow. You remember, right? So how does the poet's mood get changed? ठीक है, इसमें आप क्या आंसर दे सकते हो? So in the poem, the sudden shower in the form of the dust of snow changed the poet's mood. यहाँ पे ज़्यादा conclusion और introduction देने की जरूरत नहीं है because this is a short question. ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, in the poem the sudden shower in the form of dust of snow changed the mood of the poet. But please do not end your answer here. ये 1 mark का आंसर नहीं है बेटा, this is 3 marks question. So do not make it too short. You have to elaborate on this further. The shower of snow was caused by the action of the crow sitting on the branch of the hemlock tree. अब मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, यहां तक एंड कर देंगे, यहाँ पे एंड कर देंगे. बट हाउ कैन यू मेक योर आंसर यूनिक फ्रॉम द रेस्ट? आपको लिटरेचर में हमेशा ये कोशिश करना है कि आप अपना आंसर बाकी से थोड़ा सा अलग करो, राइट? And again, I'm reminding you that does not mean you have to use poetic language. You have to use some, a highly exceptional vocabulary. No, not at all. आप उसको थोड़ा सा डीपली एनालाइज करके जो आपने थीम में पढ़ा है उसका एक लाइन अगर आप लिख दो, बट ऑफ कोर्स इट शुड बी रिलेटेड टू द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड, तो बस आपका आंसर हो जाएगा यूनिक. ओके, सो लाइक आई हैव एडेड दिस वन. This small incident had gladdened his mood and saved his day from being wasted in despair and regret, thereby suggesting that sometimes even a small incident may prove to be of larger significance. तो ये हम जानते हैं already because this is the theme of the poem, right? This is a point related to the theme of the poem which we already know. But ये हम कब apply करते हैं? ये हम तभी apply करते हैं जब हमसे theme पूछा जाता है. But we can also add this half a line in a short question like this. तो इससे क्या होगा कि आप एग्जामिनर क्या जानेगा कि अरे इस बच्चे को तो थीम का भी पता है, राइट? Even if the question is not asked, but ये एक ऐसा question है because how does the poet's mood change, right? तो ये question में आप डेफिनेटली ये वाला लाइन ऐड कर सकते हो. दिस इज गोइंग टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ योर आंसर. सो हैव आई यूज्ड एनी वोकैबुलरी व्हिच इज वेरी डिफिकल्ट, व्हिच इज वेरी फैंसी? नो, आई हैव यूज्ड सिंपल इंग्लिश. बट लुक एट द अप्रोच, हाउ यू कैन मेक योर आंसर अ बिट डिफरेंट विदाउट यूजिंग फैंसी वर्ड्स. ठीक है? Okay, now the last question is again of short question. Let's say this is for 20 to 30 marks, that is 20 to 30 words, that is for 2 marks. Why was it important for Mrs. Pumphrey to be a little cruel in order to be kind towards Tricky? This I have taken from your sample paper. This is from Triumph of Surgery. So this is absolutely 2 mark question, should be absolutely to the point and brief. देखो मैंने 2 लाइन से ज्यादा लिया ही नहीं है इस आंसर के लिए, right? So Mrs. Pumphrey over-pampered Tricky, which led to his being obese and even lose his appetite and become seriously ill, developing, bouts of vomiting. Despite being warned by Mr. Harriot about reducing the extra snacks, maintaining a proper diet and giving him exercise, Mrs. Pumphrey failed to be strict enough to discipline Tricky, which... Sorry, I forgot to use the punctuation here. Please don't forget these things. These are very important. Which finally landed him in the hospital. So see how in a crisp manner,
how in a concise manner I have covered all the details. Yeah, without compromising on the details, guys, you have to shorten your answer. So this is again a problem with the students. They fail to shorten the answer. When they try to shorten the answer, what they do is they leave out the major points. So this is how you have to make your answer crisp without compromising on the details. So that is very very important. और ये सब कैसे होगा? Only and only if you practice writing. Very very important, guys. 10 times reading is equal to 1 times writing. So please do write your answers. And जो सबसे बड़ा problem पता है क्या है बच्चों में, कि आप लोग इवन आई हैव बीन टोल्ड, मुझे भी बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज टीच इंग्लिश इन हिंदी. तो ये बच्चे आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो. ये करने से पता है क्या होगा? व्हेन यू सिट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन योर एग्जाम, आपके जवाब हिंदी में आएंगे, उसको ट्रांसलेट करते करते आपका समय बीत जाएगा. तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना. दैट इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई आई सेड दैट आई विल नॉट टीच यू इन हिंदी. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन थोड़ा बहुत इन हिंदी, बट सी व्हेन आई टीच आई यूज वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स. तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? एंड आई ऑफ कोर्स आई मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. बट हिंदी में करने से क्या होगा कि आप आंसर्स भी हिंदी में याद रखोगे. तो जब आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना होगा. तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़े. एंड एट द सेम टाइम आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी डीपली एंड वेरी अटेंटिवली, राइट? सो प्लीज गाइज, आप वीडियोस मत देखो जहां पे हिंदी में पढ़ाया गया है इंग्लिश को. बहुत प्रॉब्लम आएगा, पता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा. मैं एक्सपीरियंस के साथ आपको बता सकती हूँ, ठीक है गाइज? सो यू प्लीज वॉच इंग्लिश चैप्टर्स के वीडियोस इन इंग्लिश, नॉट इन हिंदी, ठीक है? हाथ जोड़ के विनती है मेरी. एंड प्लीज प्रैक्टिस राइटिंग क्वेश्चंस. अब मैं लास्ट में ये बताना चाहूंगी, my last tip and advice for you guys for your exams would be related to the choice of questions. Since you have answers, since you have options in your papers, so what kind of questions can you choose जो आपको ज्यादा marks, which are the scoring questions, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है? तो ये मैंने आपके सैंपल पेपर से लिया है, राइट? आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. दिस इज फॉर 2 into 2, राइट? सो 2 मार्क्स आई गेस. तो ओके, 3 में से 2 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड पेगी जस्टिफाई हर क्रूअल बिहेवियर टुवर्ड्स वांडा. नेक्स्ट इज कस्टर्ड्स रिएक्शन वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स on seeing the pirate who according to Nelson Mandela. देखो, अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है गाइस, who according to Nelson Mandela is a courageous man. तो ये वाला बेसिकली इज कंप्लीट टेक्स्ट बेस्ड. इसका आंसर जो है पूरा टेक्स्ट में दिया हुआ है. यू जस्ट हैव टू पिक फ्रॉम द टेक्स्ट एंड राइट. सो दिस काइंड ऑफ आंसर इज वेरी 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 स्कोरिंग, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा क्रिएटिविटी का स्कोप नहीं है. और जहां ज्यादा क्रिएटिविटी का स्कोप नहीं है, दैट आंसर इज वेरी स्कोरिंग, क्योंकि वहां पे आपको बस टेक्स्ट से उठा के देना है, उसमें आपको खुद से कुछ करना नहीं है, राइट? So I would suggest for exams you should select, when you have a choice, please select these text based answers, ठीक है? Of course, if you do not know, then that is a different story altogether. But if you know, okay, if you know the answer to these questions which are text oriented, please do select those answers. Okay, तो जैसे कि यहाँ पे why is it important for Mrs. Pumphrey to be a little, okay, ये तो मैंने already बोल दिया. List any one characteristic of Bolly which reference to the first day. अब देखो, ये why did Oliver Lutkin's mother laugh as she chased him and Bill away. ये वाला आंसर, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? बिकॉज यहाँ पे you may have a different opinion, but the teacher may think अरे इसने तो यहाँ पे ये चीज मिस कर दिया है ना. तो ये हो सकता है कि आपका ओपिनियन और टीचर का ओपिनियन कभी कभी, बिकॉज दिस इज सब्जेक्टिव,
ओपन टू वेरियस इंटरप्रिटेशन। तो आप एक आंसर लिखोगे बट द टीचर वुड फाइंड दैट अरे इसने तो ये वाला पॉइंट मिस कर दिया, ये भी ऐड होना चाहिए था, राइट? क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है। सो आई वुड से दैट इसको आप अगर हो सके तो ओमिट करना। बाकी दोनों क्योंकि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। This one I have already discussed, and this one is also very easy, right? For the the first day at school. Okay, this is also very very easy. So I would suggest that you select these two questions. All right. So I'm just giving you an example. उसके बाद आते हैं हम 3 marks questions में, ठीक है? Now 3 mark questions आपके इस टाइप के होंगे. First of all, Anne writes, it was fortunate that Mr. Keesin took the right. Okay, why does she feel so? Use of symbolism in the poem. जस्टिफाई द पोएट्स allusion to, देखो अब यहाँ पे जस्टिफाई द पोएट्स allusion to Rapunzel in Amanda. ओके, यहाँ पे है सिंबोलिज्म और यहाँ पे है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको ज्यादा मतलब दे आर ऑलमोस्ट ऑन द, इफ यू वे देम दे आर ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल. यहाँ पे ज्यादा चॉइस करने का कुछ है नहीं, जो भी आपको आए. When you are talking about justifying the allusion, do mention what is an allusion. ठीक है, and also you have to talk about Rapunzel, okay, and why is he comparing, why is the poet comparing Amanda with Rapunzel? I mean, why is Amanda wanting to be Rapunzel, right? तो हो सकता है बच्चे थोड़ा सा confused हो जाए यहाँ पे, so they might ignore this. I mean, they might avoid this. So the first two questions are absolutely straightforward. So I would definitely advise you to go for the first two. ठीक है, तो जहां आप देखोगे थोड़ा सा फिगर्स ऑफ स्पीच वाला है, डेफिनेटली उसमें द टीचर वुड वांट यू टू एड्रेस द फिगर ऑफ स्पीच. तो अगर आपको लगता है कि यू वोंट बी एबल टू जस्टिफाई, ट्राई अवॉइडिंग दैट क्वेश्चन. ऑलराइट, एंड देन वी कम टू दी ओके नेक्स्ट वाला जो है, मिस्टर वेहरर वाज प्लीज दैट okay, Griffin's brilliance, darker traits. What Madame Forrester exclaimed in astonishment when she saw Matilda years after. देखो जैसे ये वाला है last question. This is very 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 textual. What Madame Forrester exclaimed in astonishment. What did she exclaim in astonishment when she saw Matilda years after? तो यहाँ पे जो end वाला जो part है in the story, guys, ये आपको पता है ऑलरेडी, कंप्लीट टेक्स्ट बेस्ड है. सो डेफिनेटली यू हैव टू टॉक अबाउट दिस. सो दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच यू शुड सिलेक्ट. एंड देन वी हैव द 5 marks question. Okay, Natalia and Ivan argued about the ownership of Oxen Meadows and the superiority of their respective dogs in the play proposal. Imagine yourself as the playwright of the play based on your understanding of the personality traits of Natalia and Ivan. Write a dialogue. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा creative question है, guys. This is a very 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 creative question. Let us see the other one. Okay, the other one is okay. Comment on the difference of the nature of help in both the characters of the two stories. The first one is वो वाला black aeroplane, and the second one is a letter to God. So if you have an option between A and B, where you have to write a dialogue, I would say if you want to score better, you avoid this type of question. Okay, because the second question is more scoring than the first. So you can get questions like framing a dialogue based on whatever just as I showed you over here. So ये वाला चीज थोड़ा अवॉइड, बिकॉज डायलॉग राइटिंग इज वेरी क्रिएटिव. अगर आपको इम्प्रेस करना है एग्जामिनर को, आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी लाने की जरूरत है. सो इफ यू नॉट वेरी सर्टेन गाइज, इफ यू नॉट वेरी श्योर, देन प्लीज डू अवॉइड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन जो है वो ज्यादा स्कोरिंग है. एंड सिमिलरली यू कैन गो थ्रू द रेस्ट गाइज. ठीक है, so I hope you have understood. thoda sa maine help I guess it is helpful for you guys, these tips and tricks, if you follow, and the kind of approach I showed you for writing impressive answers, and the entire planning, the strategy that I
talked about to attempt your English paper, guys. I hope this helps you in the long run as well, not just for grade 10. This would continue for grade 11th and 12th as well. ठीक है? So I guess it was helpful. I hope it is helpful for all my lovely students, guys. तो इसको follow करो, regular practice करो. I'm sure you're going to rock it. You're going to come out with flying colors, guys. ठीक है? So that was all from my end for this one. Thank you, guys. Don't forget to, if you think this was helpful for you guys, please do hit the like button, share the video amongst your friends, and subscribe to the channel if you still haven't. Thank you so much. Take care and bye-bye.